Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. Morning, sir. How are you, sir? Feeling better now. Okay, so as all of you have not joined yet, so we will wait for 2 or 3 minutes and then we will start our session.
Okay, students, so here I am uh, starting my session now. So I'm sharing my screen first. So I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today mainly we will be discussing about Python class and an object. But before that, I would like to discuss one more topic that you must know, which is how can you deal with date and time component. Because in most of the project, 90% project, in some way or in some other way, we are dealing with the various components of date and time. The component of date can be your, it can be day, month, and year. The component of time, yes, tell me. Yes, Mahavir, is there any problem? Yes, students, I hope I am properly audible to you. Yes, sir. You're audible. Okay, fine. Yes, sir. So, in most of the project, in some way, in some other way, we are working with various components of date and time, like day, month, year, hour, minute, second. Even in Python programming, we can have the precision of time up to milliseconds. In just a bit, you will see. So whenever we want to work with the date and time, there are various modules available. But the most popular module available to deal with the date and time component is date time. As you know, whenever we want to do anything in Python programming, first of all, we look at the available predefined functionalities, and means we see whether we have some predefined library with us or not. And here in Python library means the module and packages. So first of all, we will see whenever we are having any requirement. First of all, we will look for predefined functionality. Means we will look for whether we are having some predefined module and packages for the same or not. If it is there, then we will be working with those, right? Because whenever we will be having requirement, if we have some module and package related to that, so obviously those module packages will contain various functions, classes as per your requirement. So similarly, if you want to work with datetime, we have a datetime module for that. So as the datetime module will contain various function and classes which will be used to deal with the various components of date as well as time here. That is why here we will be dealing, we can deal with both the component date and time and various components of further of date and time. That is why the name of module is given like this, date time. So basically this datetime module contain various classes and functions. Within this we have some classes like date, time, where we can deal with date as well as time. Even if you want to deal with the date only, you have date. If you want to deal with the time, you have within this we have time also. And if you want to deal with the some differences of this, we have time delta. So we have various things available here that we can use, and in just a bit you will see how can we deal with these kind of things. So as I mentioned, if you want to work with date time, it's time to switch over ideally. We use datetime module and it is already available with the standard library of Python. So if you write import datetime, so it will be imported here. So now if you want to print current date and time, so see how it will be displayed. So if you want to display current date and time, for that purpose we can write
This is statement. Already we have imported module date time. Within this module, we have one class is named date time. And with this is a class, so class may contain various methods and attributes. So here we have one attribute. If you want to see current date and time, you have two options for that. You can use now function, now method within this. You can write like this. So if it will show you, see here, if you will see, it is showing the current date and time, which will be taken from system date, right? So it is showing the date time in this format. First of all, it is showing year, month, day, hour, minute, second, and this is millisecond. It is showing precision level up to millisecond, and these are optional. So here, in this way, you can display that. There is one more option that you can use. Instead of now, you can use today also. So you have this option also, and see, it is also showing the same thing. So you can use either of these, but this now is more popular. So we will be using this, although it is your choice that you can use. So we are doing one thing. Suppose I want to store it in some variable, so I am storing in some variable here, right? And so if you print this, it will display the output like this. This is the by default Python format of it. And see, if you are passing the same with print, it will display in proper way. So this is the by default format of date time in Python programming. So it is showing year hyphen month hyphen day space hour colon minute colon second, and here we have precision level up to millisecond. So that we have. If you are passing with print, you can see that. So it is showing current date and time. Even it is also possible that you can deal with various component of it. If you want to deal with the date only, see, you can specify x dot date only. So if you are using this x dot date, see, it is showing only date information to you, right? So we have we can access various component of it. Suppose if you want to access year only, so we have one attribute within this year. It will show you you can access year. Similarly, so here we have various function available within this class. So you can you can extract any of the component of it. If you're writing x dot day, it will specify day number to you. This is the 20th day of this month. Similarly, you can extract some other components also as per your requirement, right? I want to get information about month, so it will show you the current month, as we are dealing with the current date at this time. So it is showing you that. So in this way, you can display. See, if you want to pass the date by your own, and if you want to pass only date, so you can pass like this. You can specify the format like this. So how can you specify? If you want to define your own date, how can you display that? Or even if you are working with this only, see, if you want to specify by your own way, we can specify like this. Here we can specify date type, that is module name. Within this module, we have one class date time, and with this class, you can pass various parameter and see it is showing the intelligence feature to you. So it is showing intelligence feature to you. It's showing year, month, day, hour, minute, second, microsecond, right? Time zone on for information. And here, whatever parameter we have described, it means these are optional. It is not necessary that you must use it. These are optional. But year, month, these are year, month, and day. These are mandatory. You need to specify these. So suppose I want to specify any date, 2024, month, suppose I am taking 3, and date, suppose I am taking tomorrow date, 21. If you are passing only this, and if you use print text now, so obviously it will show you the date information. For a time, as you have not mentioned any, it is showing 000, right? So in this way, and there are various ways of formatting this also. In just a bit, we will see that kind of formatting also that you can use. You can perform various kind of formatting with this. So if you want to add some the information about hour, minute, second also with that, you can add that also. Suppose I am adding now hour information. Suppose I am taking
I want to specify something like 10th hour, 32 minutes, 56 second. So you can add these also by your own in this way, and if you use print text, it will be printed in proper way. So this is the by default date format that we can use in Python programming, right? So you can specify date and time by your own by following this. By following this format, you can deal with various components of it as per your requirement, right? So now even it is also possible that you can display your date in any format. ये तो by default format की बात होगी, but अगर हम अपने user किसी भी अब suppose if I say that please specify the date of today on your notebook in your notebook, then it will not be the case that all of you will use the same format. Every student can use a different format for that, right? सभी अलग अलग फॉर्मेट में लिखेंगे. कई फॉर्मेट हो सकते हैं डेट और टाइम के. डेट को ही अगर बात करें, डेट के को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, राइट? तो अगर हमें डिस्प्ले करना हो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपने डेट टाइम फॉर्मेट को, देन हाउ कैन वी डू दैट, राइट? So for that purpose, actually, if you want to display your date time in a specific format, we have one function strf time for that. So there is one function which is known as strf time. So first of all, we will have a look at our PPT and then we will proceed further. A Python program can handle date and time in several ways. Converting between date formats is a common task for computers. Python's datetime module help track dates and time, although there are various other modules also like time, but mostly we are using datetime. That is why I am taking this. So datetime module provides us with the object which we can use to store information about dates and time. So we have datetime module, and within module we have various classes and functions that can be used as per our requirement. So datetime.date, within this it is module name and this is for class name here. So datetime.date is used to create dates which are not associated with a time. Datetime.time is used for times which are independent of a date. Datetime of datetime is used for objects which have both a date and a time. Datetime.time delta, see delta. What is the meaning of delta in our scientific notation? Why we use delta in our scientific notation? Change To or represent difference. So just to refer some kind of change, difference mainly. So here time delta means if you are want to see difference, you want to see the time based on differences, then you can use this time delta. I'll come to that also. वो difference आपके day का difference हो सकता है, week का difference हो सकता है, hour का difference हो सकता है, right? It can be the difference of anything. So when you want to see some information related to the date time and you want to see the differences, based on differences you want to see something related to date time, then you can make use of time data. But before that, here I am talking about formatting, so we'll take that. In just a bit, we will be taking all of this. So we can query these objects for a particular component like year, month, hour, minute, perform arithmetic on them and extract printable string version from them. We need to display them as per our format. So when we want to display our date time, this is Python by default. ये तो by default अभी देखा है हमने. By default, somebody is on unmute, please mute yourself. So here ये तो by default है, लेकिन अगर मेरे को अपने से अपने specific format में display करना हो date या time को या दोनों को, so for that purpose we use one function which is known as strf time, right? We use this strf time, and with this strf time obviously we have various format specified. Date time format specifier है जो पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ डेट एंड टाइम को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं. जैसे इफ आई वांट टू डिस्प्ले माय डे इन एब्रिविएटेड फॉर्म लाइक दिस सन मंथ टू वेड, राइट, फॉर डेज, सो वी यूज दिस परसेंटेज स्मॉल ए. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हम इनके लिए यूज करेंगे. अगर इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर डे इन फुल, then you will use percentage capital A. If you want to specify that what is the number of a particular day in a week, then you can use percentage W. It will display weekday as a decimal number and it will take number. And here obviously कोई reference तो हम लेंगे नहीं ना किसी day से, तो यहाँ पर reference है
संडे के लिए 0 यूज होगा, इसी तरह मंडे के लिए 1 हो जाएगा, ट्यूसडे के लिए 2 हो जाएगा। तो अगर 2 यहाँ पे इसका मतलब इट इज रेफरिंग विच संडे मंडे ट्यूसडे व्हाट, अगर 0 संडे के लिए तो 2 किसके लिए हुआ, इट विल रेफर Tuesday. Tuesday. so it is second day means Tuesday. So if you want to specify the day of a month, किसी month में कौन सा day number है, for that purpose you can specify percentage small d. Right? If you are specifying month as in abbreviated form, right? Jan, Feb, March, MAR, April, APR, right? Jan. So here you can use percentage small b. If you want to display in full, you can use percentage capital B, right? If you want to display your month as 0 पैडी नंबर की सिंगल डिजिट अगर आ रही है और 0 आपको डिस्प्ले करना है उससे पहले, तो यू कैन यूज दिस परसेंटेज m, परसेंटेज स्मॉल m, और ईयर को दिखाना है लास्ट 2 डिजिट दिखाने ईयर का, तो परसेंट स्मॉल y, और 4 डिजिट इफ यू वांट टू डिस्प्ले परसेंटेज कैपिटल Y. सो यहाँ पे आई हैव टेकन सम ऑफ द स्पेसिफायर which we use in most of the case. If you want to see all the specifier available in the STRF type, you can take the reference of any a good website or any good reference book for that, right? So here, so how can we make use of it? Now I'll show you that, right? Suppose I'm having one date, suppose I want to display date something like this, कुछ इस तरह के फॉर्मेट में मेरे को करना है कि I want to display month, जो मेरा डे है, पहले तो डे को एब्रीवेटेड फॉर्म में दिखाना है, जैसे वैड, अगर मैं आज ही की बात करूं, उसके बाद मेरे को स्पेस चाहिए, फिर कॉमा चाहिए, फिर स्पेस चाहिए, आफ्टर दैट आई वांट टू स्पेस फॉर द डेट, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले 20, उसके बाद स्पेस, उसके बाद मेरे को मंथ दिखाना है फुल नेम, सो आई वांट टू डिस्प्ले मार्च, राइट, इस तरह से मेरे को डिस्प्ले करना है, एंड आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्प्ले ईयर, जिसमें चारों डिजिट दिखाने, सपोज इस फॉर्मेट में मेरे को दिखाना है डेट को. सो हाउ कैन यू डू दैट? सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आई विल टेक वन एग्जांपल ऑफ इट नाउ. तो एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं इसके लिए, पहले तो इसको स्टोर कर लेते हैं. So here I'll be creating one script. Then I want to display, suppose this format, कोई भी format हो सकता है. I am just taking it for example. Suppose ऐसे मेरे को डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहला टास्क है कि यू नीड टू इंपोर्ट मॉड्यूल. तो मैं काम करता है, आई एम इंपोर्टिंग फ्रॉम, आई एम राइटिंग दिस फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल. आई वांट टू इंपोर्ट, ये वेरिएशन यूज कर लेता हूँ, दिस क्लास, क्लास ऑफ फंक्शन का नेम लिखते हैं यहाँ पे, तो यू कैन स्पेसिफाई इंपोर्ट डेट टाइम. नाउ तो ये मॉड्यूल है, ये क्लास है. नाउ हियर आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन, करंट डेट, जो आज की डेट है उसी को मैं एक्सेस कर लेता हूँ. कोई भी डेट हो सकती है, यू कैन स्पेसिफाई एनी डेट as per your as you have seen. तो मैं करंट डेट ले लेता हूँ and I am storing it in X. ये अगर मैं इसको चेक करूँ, print X, बल्कि एक मैसेज के साथ कर लेता हूँ, डेट एंड टाइम. इस तरह का कुछ मैसेज मैंने ले लिया and I am using X. So I'm putting it. यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ strf time. एक्चुअली ये फंक्शन यूज करेंगे strf time underscore example dot py. अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, कभी भी है ना हमें whenever we are specifying module name,
कभी भी वो नेम यूज नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, ऑलरेडी एज ए कीवर्ड यूज वहां पे वर्क कर रहा हो पाइथन में, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे जैसा स्टेप टाइम और उसी केस में आपने लिख दिया, राइट, और अगर बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी लोकेशन पे अगर आपने इसको कॉपी किया तो हो सकता है आपका पाइथन काम ना करे, इंटरप्रेटर काम ना करे, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता तो हमें लगेगा कि पाइथन में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है। इसलिए हमेशा कुछ अलग डिफरेंट नेम लिखना चाहिए, इसलिए मैंने अंडरस्कोर एग्जांपल ही कर दिया यहाँ पे, या केस भी बदल देते तो भी ठीक था। एंड वी आर स्टोरिंग इट एट आवर लोकेशन। सो अभी तो हमारा ये करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, राइट, करंट डेट एंड टाइम, बट अब मेरे को इसको डिस्प्ले कराना है इस फॉर्मेट में, राइट। सो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम वी कैन यूज strf टाइम। सो यू विल राइट लाइक दिस, प्रिंट x डॉट strf टाइम, ये फंक्शन है, इसी के अंदर अवेलेबल है, ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर ही चुके हैं। तो सी strf टाइम स्टाइल स्ट्रिंग किस फॉर्मेट में दिखाना है आपको, तो हमें दिखाना है सबसे पहले डे को एब्रिवेटेड फॉर्म में, और डे को एब्रिवेटेड फॉर्म में स्ट्रिंग का ही ये फंक्शन है, तो स्ट्रिंग डबल कोटेशन में ये पास होगा। तो डे को अगर एब्रिवेटेड फॉर्म में दिखाना है, इफ यू लुक एट द पीपीटी, तो क्या आपका फॉर्मेट होता है उसके लिए, परसेंटेज स्मॉल ए, तो परसेंटेज स्मॉल ए करेंगे तो यहाँ पे डे आएगा एब्रिवेटेड फॉर्म में। उसके बाद मेरे को दिखाना है स्पेस कोमा, तो स्पेस के बाद कोमा दिया, फिर स्पेस, उसके बाद डे नंबर। डे नंबर की अगर हम बात करें या फॉर्मेट देखें तो डे नंबर के लिए कौन सा है बताइए। इफ आई वांट टू स्पेसिफाई डे नंबर, व्हाट फॉर्मेट शुड आई यूज? परसेंट डी, परसेंटेज डी, राइट, परसेंट डी। So percent D, here we can spell percentage D. So we can use this. After that I want to display space and I want to display month name in full. Full name display करना है month का। तो हाँ, तो इसके लिए अगर हम देखें यहाँ पे for that we have percentage capital B. So we will be using percentage capital B. After that we have year and I want to display all the 4 digits. So we have percentage capital Y, as you can see here. Y. So as per our requirement we can make use of. Now we will check whether we are getting desired output or not. So see here we are getting the same that we have done. कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, we can display it any format. सपोज मेरे को कुछ ऐसा मेरे को और भी फॉर्मेट दिखाना है जिसमें मेरे को टाइम भी लेना है, और मेरे को कुछ मैसेज के थ्रू दिखाना है। सपोज आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग लाइक दिस, कि मैंने अपना टाइम अपने से स्पेसिफाई किया। इस बार मैं अपने से टाइम ले लेता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डी एंड आई वांट टू डिस्प्ले टाइम बाय माय ऑन, सो आई एम स्पेसिफाइंग डेट टाइम। ठीक है, सो डेट टाइम एंड आई वांट टू डिस्प्ले टाइम। सपोज चलो संडे की डेट ले लेते हैं, क्या डेट होगी संडे को? 2024, मंथ है 3। संडे को क्या डेट होगी? 24। 24, तो संडे की डेट ले लेते हैं 24 और कोई टाइम ले लेते हैं कोई भी। सपोज आई एम टेकिंग सम टाइम लाइक 24 आवर्स का मैं ले रहा हूँ, 13 आवर्स 15 मिनट 30 सेकेंड सपोज। इस बार मैंने टाइम कंपोनेंट भी ले लिया इसमें, राइट। एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूं, इफ यू सी बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट तो कुछ ऐसा आएगा, तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट तो ये आ गया, राइट, जहाँ पे y हाइफन mm हाइफन यू कैन से, हालांकि परसेंटेज कैपिटल Y वी कैन से, पाइथन के फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं हाइफन परसेंटेज। हाँ जी, ये क्या होगा? percentage small m, right? After that we have this day, percentage D. So we have this. Now I want to display something like this, key on this date at this time I was at home, suppose something, कुछ भी,
इस तरह की फॉर्मेट में लेना है मेरे को, राइट। अब उसके भी इसको 24 आवर फॉर्मेट में लेना है या आपको 12 आवर फॉर्मेट में लेना है, वो भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी कैन फॉर्मेट इट लाइक आल्सो सी आई कैन स्पेसिफाई प्रिंट d.strf time, strf time के थ्रू हमें अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए हमें, तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस। तो आई कैन स्पेसिफाई, तो किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑन, यहाँ पे मेरे को डेट डिस्प्ले करनी है, तो आई कैन वो भी इस तरह से कि डे नंबर हाइफन मंथ नंबर हाइफन ईयर, ईयर के भी लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद स्पेस 8, उसके बाद मेरे को टाइम दिखाना है आवर मिनट सेकेंड, फिर मेरे को आने आई वॉज एट होम, इस तरह से मेरे को डिस्प्ले करना है सपोज। सो ऑन, अगर मेरे को डे नंबर लेना है, फॉर दैट पर्पज वी हैव परसेंटेज डी ऑन पीपीटी, यू कैन सी hyphen month number, for month number we have percentage small m, so year I want to display only last 2 digits, so percentage small y, and after that I want to specify space 8, now I want to display time, I want to display time, so for time you can use percentage h colon percentage m, कैपिटल एम, क्योंकि स्मॉल एम तो मंथ नंबर के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, एंड कॉलन परसेंटेज एस, कैपिटल एस। सो हियर वी हैव दिस। तो इस तरह का कोई भी फॉर्मेट, एंड आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग लाइक, कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, सपोज आई वाज, आई विल बी एट होम, फ्यूचर डेट है, आई विल बी एट होम, ठीक है। होली का दिन होगा तो ऑब्वियसली होली से एक दिन पहले का दिन होगा, तो सब घर पे ही होंगे। सो हियर आई एम यूजिंग इट, एंड इफ आई एम प्रिंटिंग इट dot, so here okay, no, we have completed it, so we can just check it, now we will check. So see, it is showing like this, on this date at this time I'll be at home, right? If you want to, now it is showing 24 hours. If you want to display 12 hour format, instead of percentage h you can use percentage I and see the output. Now if I am executing it, although here you need to be careful, it depends on interpreter also. In some interpreter it can be changed, in some interpreter maybe the case, if it is not defined it cannot be changed, so depending on interpreter it will work. Here you can see, here in this base interpreter it is working. So here now it is showing, as I have written 13, it is showing 01 1:15:30 I'll be at home. So we have this kind of formatting also that we can use. So we can use in various ways, as per our requirement we can make use of it, in different way we can make use of it, right? और इसका अगर मेरे को ऑपोजिट करना हो तो मीन्स कोई मेरी स्ट्रिंग है जो किसी डेट फॉर्मेट से मैच कर रही है और मेरे को बाय डिफॉल्ट पाइथन के डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है उसको, अगर इसका ऑपोजिट परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फॉर दैट आल्सो। हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। Okay, so here now suppose for example here we are having something like this, suppose कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, सपोज
मेरा कुछ फॉर्मेट है इस तरह का, समथिंग आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग लाइक दिस। टू 2021 कुछ हमने इस तरह से लिखा हुआ है 02/26 08 कुछ भी बदल दे, कोई भी मेरा ऐसा कोई डेट है 24 का। सो हियर मेरे को अपने फॉर्मेट में दिखाना है। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो मैं ना कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। सो ऑब्वियसली टू स्पेसिफाई दैट व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर string here in terms of date time, we need to specify format accordingly, because suppose अगर कुछ ऐसा होता है यहाँ पे 02/12, so अब confusion है basically this 02 is it is a day or month, it is a day or month, right? So to specify this clearly we can use we need to specify formatting, जो formatting specifier की हमने बात की थी, तो उसका मैंने फॉर्मेट यहीं पे लिख लेता हूं, बाकी एसोसिएट करेंगे उसके लिए हम यूज करते हैं strp टाइम, str for time string format, we are formatting time in string format, strp time, it is just perform the opposite operation of it. So here for that purpose उसमें दो पैरामीटर पास होंगे strp टाइम में अगर हम यूज करें, तो फॉर्मेट डेट और उसका फॉर्मेट भी, और इट इज मीनिंगफुल आल्सो, इट इज लॉजिकल आल्सो। तो उसका पहले तो हम फॉर्मेट लेते हैं। अब इसको मैच करता हुआ क्या लिखना चाहिए फॉर्मेट मेरे को, परसेंटेज, हाँ जी परसेंटेज स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आफ्टर दैट जो भी करेक्टर आ रहा है जिस तरीके से लिख रहा है, स्पेस है या कोई स्पेशल करेक्टर, उसको एज इट इज कर दो। 02 क्या होगा, 02 मैं सपोज आई वांट टू ट्रीट इट एज ए मंथ, अगर मैं मंथ नंबर की तरह ले रहा हूं तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, परसेंटेज स्मॉल m, राइट? अगर मैं परसेंटेज d लिखता तो ये इसको डे नंबर की तरह ट्रीट करता, एंड हियर वी आर यूजिंग परसेंटेज को मेरे को डे नंबर की तरह ट्रीट करना है, तो परसेंटेज d, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद इस टाइम को मैच करता हुआ फॉर्मेट, तो वी कैन यूज परसेंटेज कैपिटल H कॉलन, मंथ के लिए परसेंटेज कैपिटल M कॉलन, सेकंड के लिए परसेंटेज कैपिटल S। तो ये फॉर्मेट हो गया, इससे मैच कर दो कंप्लीट। अब हम इसको यहाँ पे एसोसिएट करते हैं अपने एक फंक्शन, तो डेट टाइम के अंदर ही एक फंक्शन है, डेट टाइम के अंदर ही यहाँ पे एक फंक्शन है strp टाइम, तो यहाँ पे ये पास कर देगा आपको पाइथन के बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में। सो हियर वी हैव टू पैरामीटर वी कैन पास, सो फर्स्ट जो मेरी वैल्यू है, और सेकंड जिस फॉर्मेट में करना है, तो फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे फॉर्मेट 1 में लिखा है, इसको डायरेक्टली भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, दोनों को भी डायरेक्टली लिख सकते थे, मैंने थोड़ा वेरिएबल के थ्रू कर दिया काम जैसा हम करते हैं। सो अगर इसको मेरे को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट, और अगर इफ आई एम प्रिंटिंग इट, वैसे तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते थे, प्रिंट रिजल्ट, so here I am printing it, run module, so if I am using it, see तो पाइथन के बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे इस तरह से था, अब पाइथन बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, आवर मंथ डे आवर मिनट सेकंड, तो ये सब अगर हम इसको चेंज कर देते ना, यहाँ पे सपोज अगर 12 होता और यहाँ पे हम परसेंटेज d कर दूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंटेज m कर दूं, अब क्या होगा, सी नाउ, तो इसको डे नंबर की तरह लेगा, इसको ये मंथ नंबर की तरह लेगा, इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, तो सी आर यू गेटिंग द डिफरेंस नाउ, पहले आउटपुट ये था, यहाँ पे मंथ नंबर ये था, लेकिन अब मैंने ये जो 02 इसको डे की तरह लिया, 12 को मंथ की तरह लिया, तो फिर मंथ पे यहाँ पे ये 12 आया। सो पाइथन के डेट फॉर्मेट में
यहाँ पे मैंने बाद में लिखा है कि यहाँ पे मंथ हमने यहाँ पे ट्रीट किया, बट बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में ये इस तरह का फॉर्मेट होता है पाइथन का. तो we are just performing opposite operation. So we can, if you want to display your date and time in some specific format as per you, as per user defined, then we can make use of strf time. और अगर कोई इस तरह के वैल्यू आ रही है कि मैं चाहता हूँ वो पाइथन के बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर पाए, ऑब्वियसली उस तरह से मैच भी होना चाहिए हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग, तो वी कैन मेक यूज ऑफ strf time, जस्ट अपोजिट ऑफ strf time. So इस तरह से we can perform various formatting also on this by using these features. अब आते हैं टाइम डेल्टा पे. टाइम का डिफरेंस अगर मेरे को देखना है, राइट, तो टाइम के डिफरेंस पे आते हैं. अगर मेरे को कोई डिफरेंस ही देखना है, so I'll be taking one example of it now. तो उसके लिए whenever we suppose I want to display what was the date yesterday, yeah, what will be the date tomorrow, what was the date 2 months before, 2 weeks before, right? So anything, what was the day 40 weeks before, what will be the date after 40 weeks, 2 days, and we can mention our minute second also. So whenever we want to see the date based on some differences, then we can make use of time delta for that. How time delta will work and what type of options are available with this, I'm going to take one example of that. So एक और नई स्क्रिप्ट बनाते हैं टाइम डेल्टा के लिए. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल तो चाहिए, डेट टाइम क्लास चाहिए, उसके कुछ फंक्शंस यूज करेंगे. और अगर टाइम डिफरेंस पे मैं काम करने जा रहा हूँ किसी रिक्वायरमेंट में, आई विल बी यूजिंग टाइम डेल्टा. दिस इज आल्सो अवेलेबल विद इन दिस मॉड्यूल. नाउ अभी तो मैं क्या करता हूँ, करंट डेट एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें करंट डेट प्रिंट करा लेता हूँ. तो यू नो दैट वी कैन यूज डेट टाइम डॉट नाउ फॉर दैट. आई वांट टू डिस्प्ले सो एंड आई एम डिस्प्लेइंग इट विद सम मैसेज लाइक करंट डेट. करंट डेट मेरे को प्रिंट कर देगा. आई वांट टू डिस्प्ले डेट ऑफ yesterday और डेट ऑफ टुमारो. डेट ऑफ टुमारो चलो, व्हाट विल बी द डेट ऑफ tomorrow. So I am just doing this. So how can you do that? See, print, and here I am specifying date of tomorrow. So for that purpose, what we can do, we can use x plus, and you want to add the difference of it. See now time delta, the variation available with this. Moment I am using time delta, oh, I have not imported it, that way it is not showing IntelliSense feature. Okay, let me do one thing. First of all इसको execute करते हैं so that we can have IntelliSense feature. उसको नाम दे देता हूँ मैं time delta example ty. अब IntelliSense फीचर मिलेगी और करंट डेट अभी ये प्रिंट भी कर रहा है हमें, ठीक है ना, करंट डेट को प्रिंट भी कर रहा है. अब if I am using this, so it is showing difference between two date time values. अब ये डिफरेंस किस बेसिस पे हो सकता है? ये जो डिफरेंसेज है, अभी मेरे को चाहिए डेट ऑफ टुमारो, तो आई कैन राइट लाइक दिस. डेज किस बेसिस पे डिफरेंस चाहिए आपको? डेज के बेसिस पे. यू विल बी राइटिंग डेज. हाउ मेनी डेज? 1. प्लस किया है, प्लस किया और 1 किया, तो ऑब्वियसली डेट ऑफ टुमारो की अगर माइनस कर देता तो यस्टरडे की डेट आ जाती. तो वी कैन मेक यूज ऑफ लाइक दिस. इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, so it is showing date of today is this current date and tomorrow will be this, right? So here we are making use of it, and now we have various variation of it. अगर यहाँ पे मैं माइनस कर देता तो ऑब्वियसली यस्टरडे की डेट हो जाती. और अगर आपको अब और भी वेरिएशन है इसके, यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे वेरिएशन क्या क्या अवेलेबल है इसके साथ. वी हैव वीक्स, वी कैन सी द डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ वीक्स, डेज, मंथ. और मंथ के बेसिस पे या ईयर के बेसिस पे नहीं है, वो भी वीक से मेंटेन करना पड़ता है हमें टाइम डेल्टा में. वीक्स है, डेज है,
आवर्स है, इनमें से आप सारे या कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आवर्स के बेसिस पे देख सकते हैं, मिनट्स के बेसिस पे देख सकते हैं, सेकंड्स के बेसिस पे देख सकते हैं, इवन मिली सेकेंड्स भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। मिली सेकेंड्स के बेसिस, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ये सब आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकेंड्स तक ले रहा हूँ। सो हियर वी कैन मेक यूज ऑफ इट। मीन्स suppose I want to see what will be the date after the differences of 2 weeks, 2 weeks, 1 day, 10 hours, 30 minutes, 50 सेकेंड। क्या होगा? प्लस है तो ऑब्वियसली आगे के दिखाएगा, तो व्हाट विल बी द केस। सो सी वट एवर विल बी द डेट, इट विल शो यू दैट इस डिफरेंस के बेसिस पे जो भी होगा। सो इट इज शोइंग, हालांकि इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सी आफ्टर 2 week 1 day 10 hours 30 minutes 50 seconds, this will be the output. It is showing, it will be 4th April 2024 and the timing will be this. Timing will be this, right? It is showing this. So you can use either of, you can use all or either of the option of it. अगर मेरे को आवर मिनट सेकंड ही देखना होता तो हम इसको हटा देते, आवर्स लिख देते। आवर मिनट सेकंड तीनों को कंसीडर करना है तो ये। सो यू कैन यूज, यू कैन सी बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ दीज। हाँ, मंथ्स वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मंथ्स का ऑप्शन नहीं है। अगर हम ट्राई करके देखें यहाँ पे मंथ्स इक्वल्स टू, अगर मैं हम यहाँ पे करें 2 months, वी कैन ट्राई। तो सी इट इज शोइंग मंथ इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर दिस, जो भी हम लिख रहे हैं। एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो इट इज शोइंग दैट। सो मंथ्स के बेसिस पे नहीं होगा ये, बी केयरफुल। सो इट इज वर्किंग। तो हियर in this way you can deal with various components of it, right? अब एक होता है अगर जोन के बेसिस पे कुछ देखना हो, अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग बेस्ड ऑन जोन, तो जोनिंग पे अगर काम करना है तो जोनिंग के लिए ना एक मॉड्यूल हम यूज करते हैं, एक मॉड्यूल यूज किया जाता है PyTZ। अगर जोनिंग के बेसिस पे सपोज मेरे को देखना अभी जो यहाँ पे टाइम है, इंडिया में जो टाइम है, अगर मैंने लिख रहा है इसी समय अमेरिका में क्या टाइम होगा, राइट? यूरोप में क्या टाइम होगा, कहीं पे भी मेरे को देखना है किसी भी कंट्री का, तो कैसे हम देखेंगे? तो उसके लिए ना एक मॉड्यूल यूज किया जाता है PyTZ। अभी मैं उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करूं, अगर हम इंपोर्ट करें, एक मॉड्यूल है PyTZ, लेकिन ये ना बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे? अगर कोई, ये तो ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है एक्चुअली, जोनिंग से करना है तो थर्ड पार्टी, ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की किसी फंक्शनैलिटी को यूज करना है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है कोई पाइथन की, थर्ड पार्टी मॉड्यूल है उसको या पैकेज है उसको मेरे को अपने जो लाइब्रेरी उसके साथ एसोसिएट करना है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या है, यूटिलिटी है आपकी, कमांड यूटिलिटी है आपकी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसके लिए पिप यूटिलिटी को यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट यूटिलिटी है। वी विल बी राइटिंग पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल करें PyTZ। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को कभी भी हमें करना है तो ये वी यूज दिस पिप यूटिलिटी, राइट? पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। सो हियर इफ आई एम यूजिंग इट, तो ये क्या करेगा? इसको डेट से कनेक्ट होंगे आप, तो डाउनलोड करेगा इस लाइब्रेरी को, इंस्टॉल कर देगा और ऐड कर देगा आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ। सो इट इज शोइंग सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड PyTZ, राइट? सर एक इट डाउट इज है शोइंग यहाँ पे, दिस। हाँ जी, वो फिर हम लोग डायरेक्ट एडिटर से अब पिप इंस्टॉल नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, ये कमांड प्रॉम्प्ट यूटिलिटी है, इसलिए बोला कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट की यूटिलिटी है, राइट? ओके। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ क्योंकि उसमें शायद PPT में ये नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लगा जैसे कि कैन हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस।
डिफरेंसेस का दिखाया है इसमें। तो लास्ट में यहाँ पे जोनिंग के लिए ये तब हम यूज करेंगे अगर मेरे को जोन बेसिस पे, टाइम जोन के बेसिस पे कुछ करना है। पूरे वर्ल्ड को कई जोन में बांटा गया है। So, अब हम ट्राई करें अगर PyTZ को एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं। इसको इस तरह करने के बाद आप क्लोज कर सकते हैं। सो नाउ अगेन इफ आई एम ओपनिंग अवर आइडियली, if everything is fine, then if we try to import it again, PyTZ, so it is imported now, right? अब हम देखते हैं अपना इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। सो एक मैं इसके बना लेता हूँ उसके लिए भी टाइम जोनिंग की। सो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम क्लास एंड इंपोर्ट PyTZ, राइट। इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ जिससे कि वी कैन गेट इंटेलिजेंस फीचर आल्सो। और यहाँ पे इसको मैं नेम दे देता हूँ टाइम जोन एग्जाम्पल। एडिशनल एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जोनिंग बेसिस पे भी काम करना हो। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लिए आन दो इसमें हम। तो ये तो एक एडिशनल चीज है यहाँ पे, सिंपल कोड। सो नाउ हियर वी हैव, सो वी हैव एग्जीक्यूटेड इट। अब फिर से आते हैं अपने स्क्रिप्ट पे। सबसे पहले तो हम अपने इंडिया में जो लोकल टाइम है उसी को डिस्प्ले करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ और कुछ भी यहाँ पे इसको नेम लिख दे। सपोज आई एम राइटिंग लोकल टाइम है हमारा, एक वेरिएबल ही ले लिया एंड आई एम डिस्प्लेइंग लाइक दिस प्रिंट इंडियन टाइम इज, सपोज कुछ मैसेज के साथ प्रिंट कर लेते हैं। एंड इंडियन टाइम तो दिखा ही रहा है हमारा लोकल डॉट, और उसको भी किसी फॉर्मेट में दिखाते हैं strf टाइम। तो ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट नाउ। तो उसको भी मैं कुछ ऐसे दिखा लेता हूँ कि यहाँ पे डेट और या टाइम दोनों दिखा देते हैं। तो वो भी थोड़ा सा इस तरीके से लिखा लेता हूँ कि मैं पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर, जिस तरह से आप दिखाना चाहें, जैसे भी चाहें। परसेंटेज आई एम स्पेसिफाइंग डे, परसेंटेज here we are specifying this, जैसे हम चाहे परसेंटेज डे स्लैश परसेंटेज एम परसेंट वाई। और अगर आपको दिखाना है टाइम भी तो टाइम भी हम दिखाते हैं, वो इसके परसेंटेज एच एम कोलन परसेंटेज। सो अभी हमारा जो लोकल टाइम है यहाँ पे अभी है 11:27, राइट, एंड दिस इज द डेट। सो इट इज शोइंग दैट इट इज 20th March 2024. अब if I want to see what is the time and date in New York at this time, न्यूयॉर्क में क्या है, तो उसके लिए ना पहले जोनिंग बतानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जोन बेसिस पे हमारा टाइम डिवाइड होता है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम देखें, हम DST भी यूज करते हैं, यहाँ पे हम UTC टाइम स्टैंडर्ड यूज कर देते हैं, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो उसमें जोनिंग में डिवाइड किया गया है। तो PyTZ में क्या है कि एक यहाँ पे PyTZ करने पे ना एक फाइल होती है, उसको मैं शेयर भी कर दूंगा ना। लेट मी शो यू दैट। एक फाइल है यहाँ पे, मैंने उसको लिया भी है, कंट्री इन्फो। इसमें जोनिंग की इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, सैंपल कोड भी कर देते हैं इसको। अब इसमें क्या है कि अगर आप देखें, जहाँ पे वर्ल्ड की जितनी भी प्लेसेस हैं, कंट्रीज हैं, उनके जोनिंग यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो उसके कुछ जोन कोड है। जैसे अगर मेरे को अभी अमेरिका का देखना है, अमेरिका में देखना है, तो यहाँ पे अमेरिका के लिए अगर हम देखें, अमेरिका के भी कुछ एरिया का देखना है,
जैसे अमेरिका बारबाडोस है, अमेरिका लापेज, अमेरिका देश, अमेरिका, सो वी हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ इट, राइट। तो हमें न्यूयॉर्क का देखना है तो उससे भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेक ही करूँ, एक बार सर्च करके देख लेते हैं न्यू, ये अमेरिका न्यूयॉर्क, तो इस तरह का देखो ये जोनिंग है इसकी, अमेरिका न्यूयॉर्क कुछ ये है। तो इसका क्या मतलब है, कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह कोई किसी भी एरिया का अगर आपको देखना हो, एशिया के भी एरिया है आपके, राइट, यूरोप है, एशिया है, एशिया में भी कई एरिया है, कौन से एरिया का देखना आपको, जापान का देखना है, कहाँ का। सो वी हैव सम कोड्स बेस्ड ऑन दैट, जोन कोड है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई जोनिंग में डिवाइड किए गए, इस फाइल को मैं शेयर कर दूंगा सो दैट यू कैन यूज दिस आल्सो। जैसे अभी अमेरिका न्यूयॉर्क वाले एरिया का मेरे को देखना है, सो हियर कैसे यूज करेंगे, तो उसमें पहले तो टाइम जोन की इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो यही इसीलिए PyTZ यूज किया, क्योंकि PyTZ के अंदर ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन होता है, टाइम जोन, यहाँ पे क्या द फंक्शन है, एंड इट रिक्वायर्स द कोडिंग जोन। जोन को स्पेसिफाई करने के लिए वी राइट दिस, ये जो कोड है ये कोड हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये टाइम को मैनेज करेगा। और इसको मैं कुछ वेरिएबल में ले लेता हूँ। सपोज वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख दे, सपोज मैं लिख देता हूँ TZNY न्यूयॉर्क, सपोज कुछ भी, और इसको हम एसोसिएट करेंगे अपने टाइम से। सो हियर सी, अब जो आप दिखा रहे हो कि जो करंट टाइम है इसी को मेरे को देखना है, तो व्हाट आई विल डू, ये जो करंट टाइम है ना, तो इसी में मैं इसको पास कर दूंगा Ctrl+V। और अब जो नाउ आप दिखा रहे हैं, यू वांट टू सी बेस्ड ऑन दिस टाइम जोन, सो यू कैन एसोसिएट विद दिस लाइक दिस, जो तो अब ये जो टाइम लेगा इसके अकॉर्डिंग लेगा, एंड सी करंट टाइम ही दिखा रहे हैं उस अभी इस समय वहां पे क्या करंट टाइम है, इट विल शो यू दैट। और सिंपली इसी फॉर्मेट में दिखाना है, तो मैं मैसेज ये ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया x, और इसका यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूयॉर्क टाइम इज, एंड हियर वेरिएबल है मेरा x तो टेस्ट ऑफ टाइम, और फॉर्मेटिंग वही उसी फॉर्मेट में मेरे को देखना है। तो इफ यू लुक एट दिस रन मॉड्यूल, ओके, तो सी इसने कैलकुलेट किया एंड इट इज शोइंग इस समय वहाँ पे जो टाइम है न्यूयॉर्क में टाइम है, राइट, हियर न्यूयॉर्क में टाइम है 2:137, राइट। और ये 2 कौन सा टाइम है, ये आपका मिडनाइट का है, राइट, वहाँ पे रात हुई है, ठीक है, वहाँ पे मिडनाइट वाला टाइम है अभी। इसी तरह से कहीं पे भी कहीं का भी देखना हो, सपोज कोई और देखना है मेरे को, लंदन का टाइम देखना है, लंदन में क्या है, तो लंदन के भी जोनिंग अगर हम देखें, लंदन का जो जोनिंग है दैट इज, सर्च कर लेते हैं, करके चेक करना पड़ेगा लंदन। ओके, तो ये जो है इसकी यूरोप लंदन। हाँ जी बताइए। सर इसमें AM PM के लिए भी कुछ है प्रीडिफाइन? हाँ, एच की जगह आई कर देंगे। अभी तो खैर इसमें जो टाइम दिखाया है उसमें हमें ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। एच की मैंने दिखाया था अभी प्रीवियस एग्जांपल में, तो 24 लेना है या आपको क्या लेना है, एच की जगह आई कर देंगे तो उसी को लेगा। लेकिन अभी आज करे आई करे अभी तो एक ही दिखाएगा। आर यू गेटिंग, क्योंकि टाइम ही ऐसा 11 यहाँ पे, तो ठीक है। या हम अपने से भी दे सकते हैं टाइम कुछ भी, यहाँ पे तो मैं करंट टाइम पे ले रहा हूँ। अगर सपोज मेरे को लंदन का देखना है तो लंदन का जोनिंग इंफॉर्मेशन है दिस, और इसको एसोसिएट कर लेते हैं इससे। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी, why do we और ये need to एडिशनल do चीज the है, ये जरूरी नहीं है, ये तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी हमारी। इससे पहले जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट जरूरी है, वो तो हम यूज करते ही है। दिस इज जस्ट एडिशनल थिंग, इसलिए इसमें मैंने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी ली है, तो दिस इज एडिशनल थिंग। बट मेरे को लगा एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिया। हाँ जी बताइए, कुछ सर पूछ रहे हैं। मेरा डाउट था वो, लाइक जब हम x डिफाइन कर रहे हैं सेकंड टाइम x इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, कैन वी जस्ट डायरेक्टली राइट ओवर देयर अमेरिका स्लैश न्यूयॉर्क, और डू वी हैव टू टेक द TZNY? व्हाट ये इज पूरा लिखना द पड़ेगा ना, जोनिंग बतानी पड़ेगी। अगर इस ये नहीं, अगर डायरेक्टली ऐसा काम होता तो मेरे को PyTZ की जरूरत ही नहीं थी। ओके, आर यू तो क्या गेटिंग, कर रहा है वो PyTZ यहाँ पे ये जोन एग्जैक्टली? में बता रहा है कि जो भी टाइम है
किस जोन के अकॉर्डिंग आपको टाइम देखना है। जो करंट टाइम है बाय डिफॉल्ट ये किस जोन के अकॉर्डिंग अगर आप देखना है, ठीक है ना। Okay. अभी ये जो कोड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ ना, मेरे को ये जो कोड है अभी मैं इंडिया में बैठ के चला रहा हूँ, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो सेट है हमारा, जो टाइम सेट होगा ना, वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, जो डेट टाइम होगा, इसलिए इसने ले लिया। लेकिन यही कोड अगर हम अमेरिका में बैठ के चलाएं तो तब थोड़ी ना ये टाइम आएगा, वहां पे उसके अकॉर्डिंग टाइम आएगा। तो कैसे मैनेज हो रही है चीजें। अब यहाँ पे मैं यहीं पे इंडिया में बैठ के ही मैं सारे टाइम देखना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड के किसी भी जोनिंग के, तो उस समय इसी समय क्या टाइम होगा, फॉर दैट पर्पज मेरे को जोनिंग की इन्फॉर्मेशन तो देनी होगी ना, क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड तो यूज नहीं कर रहे हैं हर जगह। जोन में डिवाइड किया गया, यूटीसी में डिवाइड किया गया। यूटीसी क्या है हमारा, क्या यूटीसी है, इंडिया कौन से जोन में आता है अगर हम यूटीसी की बात करें तो 5:30 IST। 5:30 प्लस 5:30, तो उसको यहाँ पे नेम दे दिया गया, इस फाइल में हम नेमिंग ही दे देंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाएगा उस, राइट। तो उसको मैनेज कर रहे हैं, बाकी उस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको मैनेज करने का। मैंने एक तरीका बताया थोड़ा सिंपल सा, जो थोड़ा प्रेफर्ड भी रहता है, Okay, sir. सर ठीक है। हम बाकी लोग तो इफ यू विल, कंप्यूटर का डेट अगर इंटरनेट पे टाइम देखेंगे ना, को यू विल चेक कर फाइंड सकते सो हैं। मेनी ऑप्शंस। और ये पाइथन का ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूँ PyTZ, ये थर्ड पार्टी, इस तरह पता नहीं बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होंगी जिसमें इस तरह के कई अलग वे भी होंगे, राइट। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। सर हम लोग तो पीसी का अपने डेट टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये अगर वही हाँ कर ही सकते हैं। लेगा तो फिर तो रॉन्ग दिखा देगा। अब हम सारा कंट्रोल अपने कोड के थ्रू कर रहे हैं। एक है आप कंप्यूटर में जाके हम चेंज करें, और एक है अब यहाँ पे सबका देखना हो तो हर एक का तो चेंज नहीं कर पाएंगे ना, और कोड के थ्रू ही मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें। आर यू गेटिंग द इम्पोर्टेंस। नहीं सर, मतलब अगर हमने यहाँ पे रॉन्ग चीज सेट की है तो कंप्यूटर में मतलब प्रोग्राम में भी रॉन्ग ही दिखाएगा फिर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका मतलब सेटिंग ही कंप्यूटर की गड़बड़ जा रही है, तब तो या तो कोड के थ्रू उसको मैनेज करें किसी तरीके से, या फिर आप वहां पे सेट करें। जो बाय डिफॉल्ट जहाँ से ले रहा है वो चीज़ तो ठीक होनी चाहिए ना, ओके सर। नहीं तो पूरा टाइम सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ा जाएगा। दो सर्वर है, सिंक में चलाना है, लेकिन एक पे कुछ और आपका यूटीसी सेट हो गया, दूसरे पे दूसरा यूटीसी, तो क्या वो सिंक में काम करेंगे सर्वर? नहीं। नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे हम अपने कोड के थ्रू मैनेज कर ले रहे हैं वो, वहाँ पे उस यूटीसी को चेंज करने के चक्कर में गए ही नहीं, जो हम कंट्रोल पैनल के थ्रू कर रहे होते हैं। और भी कई तरीके हैं, ये भी मैंने एक तरीका बताया जो थोड़ा सा प्रेफर्ड होता है। ये काफ़ी पॉपुलर मॉड्यूल होता था, पार्टी लाइब्रेरी है लेकिन काफ़ी पॉपुलर मॉड्यूल है जोनिंग से रिलेटेड अगर कुछ कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे चलो एक लंदन का भी केस देख लेते हैं, और तो स्क्रिप्ट तो लिखी हुई है। सो यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लिया एंड यहाँ पे हियर आई एम एसोसिएटिंग इट। तो किसी से भी कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई वेरिएबल ले लिया y, इसे एसोसिएट कर देंगे। इसे एसोसिएट किया और मैसेज प्रिंट करा लेते हैं कुछ। तो यू कैन सी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सेम दिखा रहा है, सेम टाइम, सेम तो नहीं होगा। सर सर इसमें y आएगा, y.strf। सर लास्ट लाइन प्रिंट हाँ स्टेटमेंट में। यस सर यस इसमें यस, y आएगा। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी पेस्ट का यही तो प्रॉब्लम है, मैं ध्यान नहीं दिया था। यस, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, दोनों की ज्योग्राफी में बहुत डिफरेंस है, तो अब आ गया डिफरेंस, राइट। लंदन में अभी सुबह के 6 बज गए हैं, 6:26, ठीक है। सो वी हैव दिस, सो in this way we can deal with this date and time kind of thing। ये तो एक एडिशनल चीज हमने लिया जोनिंग की, लेकिन इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है दैट यू मस्ट नो कि वो तो यूज होगा ही होगा, कहीं पे भी करें, वो बेसिक है एक्चुअली,
जैसे इससे प्रीवियसली वी हैव टेकन द केस ऑफ फाइल हैंडलिंग, फाइल के कॉन्सेप्ट किए. सो यू कैन डील विद वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ फाइल. तो हर एक फॉर्मेट के लिए और भी कई मॉड्यूल बने हुए हैं. जैसे एक्सेल पे काम करना है तो पाई एक्सेल भी है, सीएसवी पे फाइल करना है तो सीएसवी नाम का मॉड्यूल ही है. उसको भी आप कभी ट्राई करके देख सकते हैं अगर कभी टाइम मिल. तो ये तो हमारे अवेलेबल भी शायद इसी में ही है. सीएसवी तो स्टैंडर्ड में ही अवेलेबल. अगर मैं देखो इंपोर्ट सीएसवी फाइल पे काम करना, इंपोर्ट सीएसवी, सी इट इज अवेलेबल विद दिस. तो और भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मॉड्यूल है व्हेनेवर यू वांट टू डील विद ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल. तो जब आप कोई और मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे जो रीड और राइट से रिलेटेड फंक्शन है ना, उनके नेम वेम चेंज हो जाए. नेम भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होते, कुछ ऐसा होगा. जैसे सीएसवी में अगर आप कभी ट्राई करें, यहाँ पे रीड करने के लिए नॉर्मली हम लिखते हैं रीड, यहाँ पे हो जाएगा रीडर. अगर सीएसवी मॉड्यूल के थ्रू करेंगे सीएसवी डॉट रीडर रीड के लिए. राइट ऑपरेशन करना है तो सीएसवी डॉट राइटर, सीएसवी डॉट राइट लाइन्स यहाँ पे भी है. राइट. तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है फंक्शन नेम का, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट भी दिखना होता है. किसी मॉड्यूल को जिसने अपना बनाया था पार्टी थोड़ा डिफरेंट सा नेम रखेगा वो, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम होगा. कॉन्सेप्ट वही चलेगा. फाइल पे काम करना है तो पहले ओपन, उसके बाद उसका मोड वगैरह बताएंगे आप, फिर आप ऑपरेशन चेंज करेंगे. हो सकता है ऑपरेशन में फंक्शन नेम वगैरह चेंज हो जाए वहां पे, लेकिन जो बेस जो आपने पढ़ा है ना फाइल का बेस, वो सेम वही रहेगा. बेस्ड ऑन दैट यू कैन, आफ्टर दैट यू कैन वर्क विद अदर फाइल फॉर्मेट्स आल्सो, और आगे चल के आप करेंगे भी. तो ये जो हमने बताया अब तक ये बेसिक्स है इसका. टाइम ये मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट ये बहुत जरूरी चीज है जो आनी चाहिए. बड़ी सिंपल सी चीज है बट जरूरी चीज है. सो हियर so this is about date time. Now next we will be discussing about class and an object, right? उससे पहले I would like to mention some more facts. कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पे. Already I have told you about scoping of the variable while you are dealing with the function, right? तो कुछ और भी आज थोड़ा सा और एडिशनल चीजें देखते हैं इसमें. As you know, in Python programming everything is an object, right? Everything is an object. If I have written a equals to 2, so here 2 is an object and you are giving just name to this. एक object reference variable name दे रहे हैं इसको a, जो लोकेट कर रहा है उस मेमोरी को जहाँ पे ये वैल्यू आपकी स्टोर हुई है. तब यहाँ पे भी पाइथन में एक नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है. इवन सी लेट मी शो यू वन इंटरेस्टिंग केस. इन पाइथन प्रोग्रामिंग इफ यू राइट दिस import this, it will show you one poem which is known as JanoPython, right? इस poem में भी एक चीज इन्होंने लिखी है जहाँ पे अब कंसर्न है, नेम स्पेस आर वन honking great idea. So name space. So now next I am going to take the case of namespace. Namespace क्या आता है? Namespace basically it used to specify that area where you are working, that region where you are working. अब इस रीजन जहाँ पे आप काम कर रहे हो, we can divide into two categories. So we can have three types of namespace here, and these are built-in namespace. We have global namespace and we have local namespace. Built-in namespace, whenever moment you are starting your Python session, जैसे आप start करते हैं ना Python session, तो एक built-in namespace बन जाता है. And whatever things are available in built-in namespace, you need not to import anything to access those. And already मैंने एक बताया आपको कि अगर आपको देखना हो कौन सी चीजें अवेलेबल है built-in namespace में, we have this dir double underscore built-ins डबल अंडरस्कोर. तो इसमें जो फंक्शन है ना यहाँ पे, ये जो फंक्शन नेम है इनको एक्सेस करने के लिए आपको किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन बिल्ट इन नेम स्पेस, राइट. अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉड्यूल के फॉर्म में डिफाइन की गई है, तो उनको अगर एक्सेस करना है तो पहले आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा. तो उस तरह के सिनेरियो अगर आप काम कर रहे हैं कि मॉड्यूल करें, फिर जैसे मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं एक रीजन क्रिएट होता है कि उस रीजन को हम बोलते हैं ग्लोबल नेम स्पेस. तो ग्लोबल नेम स्पेस बेसिकली यूज टू रेफर योर मॉड्यूल्स. तो जो भी एक बार मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया तो फिर वो उस पूरे सेशन में आप एक्सेस कर सकते हैं उसको, राइट. फिर आप जैसा चाहे उसको यूज करेंगे. एक बार मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आप चाहे कितनी बार करें. जैसे अगर मेरे को
I know that we have sqrt function in math module, so we can specify from, इस बार from के थ्रू कर लेता हूँ, from math import sqrt। मोमेंट ही आपने ये कर लिया, अब आप sqrt को जितनी बार चाहे उतनी बार यूज करें, जितनी बार चाहे, और पूरे सेशन में ये आपका यूज होता रहेगा एक बार अगर आपने इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये ग्लोबल नेम, जैसे आप इंपोर्ट करते हैं ग्लोबल नेम स्पेस डिफाइन हो जाता है, एंड वट एवर थिंग्स आर डिफाइन इन ग्लोबल नेम स्पेस इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल को रेफर करता है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट वंस यू हैव इंपोर्टेड इट, राइट। और ये मेरा यहाँ पे भी यूज हो सकता है, और आई कैन मेक यूज ऑफ इट विद इन एनी फंक्शन आल्सो, मैं चाहूँ तो किसी फंक्शन के अंदर भी इसको यूज कर सकता हूँ, राइट। एज पर माई रिक्वायरमेंट आई कैन मेक यूज ऑफ इट विद इन फंक्शन आल्सो। सो हियर आई एम, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, हियर इफ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, सी इट इज शोइंग दैट जो भी आउटपुट है। सो ग्लोबल नेम स्पेस में वो आपके फंक्शन के अंदर भी डिफाइन हो जाते हैं, बट वट एवर थिंग यू आर डिफाइनिंग विद इन, वट एवर वेरिएबल यू आर डिफाइनिंग विद इन any function, outside of that it will not be accessible, because this it is used to, the function is used to refer local namespace, local namespace में जो भी होता है उससे बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता, और फंक्शन के अंदर जो स्पेस डिफाइन हो रहा है उसी को हम लोकल नेम स्पेस बोलते हैं। दैट इज व्हाई दिस लोकल नेम स्पेस इज क्रिएटेड व्हेन ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड, राइट, व्हिच इज ऑल द नेम्स डिफाइंड इन इट। और हमने पहले ही बताया फंक्शन के अंदर जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं उसका लोकल नेम स्पेस होता है, उसको उसके बाद फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बट फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, अगर मैंने कुछ ऐसा ही यूज कर रहा हूँ, मैंने यूज किया इक्वल्स टू 20, so within function I can make use of it. Suppose I have written it a plus this, so it will work accordingly। अगर मैं फंक्शन को कॉल करूं तो सिंटैक्स एरर कहीं पे कुछ आया क्या? अच्छा, अभी डिफाइन ही नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, पहले यूज कर दिया, फंक्शन को डिफाइन करना, अभी डिफाइन हुआ है। आप उसको मैं कॉल करूं तो here it is working, right? So I 5 plus 20, but अगर मैं डायरेक्टली ए को अगर यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ, it will, this a will not be accessible because it is having local namespace, it is local to that particular function only, outside of that function it will not be accessible। So SQRT को कर पा रहे थे आप, चाहे वो बाहर हो या अंदर, दोनों जगह, लेकिन ए को मैंने डिफाइन किया इसके अंदर, तो आउटसाइड ऑफ दैट इट विल नॉट बी एक्सेसिबल, वहाँ पे एरर आ जाएगी। सो although already you are familiar with this thing, it just, so we have just recalled these things, and already you are familiar with this, so you can tell me what will be the output of this program. See, first of all let me show you what we are doing in this। in this सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा First of all, I have declared one outer function. एक function define किया, I have given a name to this function, outer function. Within this function, I have declared one variable, a, initialized with 20, and here, see, I am defining function, and in this function, I am using another function. ये nested function हो गया। एक और function define किया, inner function, वहाँ पे भी एक variable लिया, वहाँ पे कुछ functionality define की जहाँ पे print करा रहे हैं कि value को। अभी इसी function के बाहर, अभी ये function मैंने define किया, और ये function के अंदर अगर हम देखें, द एरिया ऑफ दिस फंक्शन इन अ फंक्शन इज दिस। अभी मैं ऑलरेडी स्टिल मैं इसी फंक्शन के अंदर हूँ, अब हम डिफाइन करें, इसके अंदर मैंने फंक्शन को देखो डिफाइन भी किया और कॉल भी कर लिया। इस फंक्शन को कॉल किया तो यहीं पे जाएगी आपका पॉइंटर, इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। फिर इस फंक्शन के बाहर मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ ए की वैल्यू को, और ये जो बॉडी है आपकी इस फंक्शन की है, ये जो आउटर फंक्शन है, तो ये अभी हमने बस डिफाइन किया है, इस फंक्शन को डिफाइन किया, इस फंक्शन के अंदर इसको मैं डिफाइन भी कर रहा हूँ, कॉल भी कर रहा हूँ। सो अब आते हैं यहाँ पे बाहर, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, तो डिफाइन हो जाएगा, डेफिनेशन स्टोर हो जाएगी। हियर आई एम डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल एट 10, और उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, आपकी ये पाइथन इंटरप्रेटर विल लुक फॉर द डेफिनेशन, और अगर डेफिनेशन है यहाँ पे, सो इट विल एंटर हियर। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया 20, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, ये 30 प्रिंट, और यहीं पे कॉल भी कर दिया, लोकल भी है अभी, तो ये कॉलिंग इस पे जाएगी। तो जैसे इसको कॉल किया गया, ये इसकी डेफिनेशन देखेगा पहले उसी स्कोप में जहाँ पे है,
और लोकल है तो लोकल भी देखेगा, यहाँ पे गया फिर से यहाँ पे किया प्रिंट, एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसके बाहर आएगा फिर वैल्यू प्रिंट करेगा एक ही वैल्यू को, इससे बाहर आ गया यहाँ पे फिर एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो तीन प्रिंट है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। तो बताइए मेरे को क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले कौन सा प्रिंट कॉल होगा एज पर दिस कोड? सर इनर फंक्शन 30। इनर फंक्शन ये कॉल होगा, तो क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे? a इक्वल्स टू 30। 30, ठीक है, इक्वल्स टू 30, ठीक है। ओके, नाउ अब ये सेकंड कौन सा प्रिंट होगा, ये या ये? किसको सर इसका से आउटर करें? फंक्शन की वैल्यू प्रिंट ये होगी वाला, इक्वल 20। मतलब इन फंक्शन ये वाला कॉल होगा सेकंड। तो क्या आउटपुट आएगा एक का यहाँ पे? 20। ठीक है, उसके बाद फिर कॉलिंग होगी आपकी यहाँ पे, ये वाला कॉल होगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या आएगी? 10। ठीक है, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू यहाँ पे है। सबसे पहले ये देखेगा वैल्यू अवेलेबल है एक ही कि नहीं है, अवेलेबल है तो इट विल प्रिंट दैट। उसके बाद एक वॉज टू इसकी वैल्यू को देखेगा, लेकिन वेयर इट विल लुक फॉर द वैल्यू ऑफ ए, कहाँ पे देखेगा? यहाँ पे देखेगा या यहाँ पे देखेगा? इनर के अंदर देखेगा, इनर से बाहर? आउटर फंक्शन, आउटर में देखेगा, क्योंकि ये जो है, ये जो ए है यहाँ पे, दिस ए इज लोकल टू दिस ओनली, आउटसाइड ऑफ इनर इट विल नॉट बी एक्सेसिबल। तो यहाँ पे मोमेंट मैंने ए यहाँ पे लिखा है, इसकी डेफिनेशन ये इसके बाहर देखेगा यहाँ पे, राइट। सो एक यहाँ पे डेफिनेशन है तो 20 मिल गया, और यहाँ पे ये जो है ये आउटसाइड है बिल्कुल, तो इसकी डेफिनेशन ये बाहर ही देखेगा, क्योंकि ये ए इसके लिए लोकल है, इसके लिए ये आपका नॉन लोकल है, इसके लिए नॉन लोकल है, लेकिन इस पर्टिकुलर आउटर के लिए लोकल है, तो इसी के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो वी आर गेटिंग दिस। अब इसके कुछ वेरिएशंस पे आते हैं। सपोज इसी केस में मैंने क्या किया, सपोज आई हैव नॉट यूज दिस, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। सेम आएगा या डिफरेंट होगा? सब लोग यहाँ पे आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग, देन 20 and then 10। ठीक है। तो सी, जब ये यहाँ पे आया, सबसे पहले इसको कॉल किया गया तो यहाँ पे आया, यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे इसको कॉल किया गया, यहाँ पे कॉल आई, तो यहाँ पे एंटर किया तो ये फंक्शनलिटी मिली। सो इट लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ विद इन दिस फंक्शन ओनली, इट इज नॉट देयर। देन अब यहाँ पे देखिए कोई ग्लोबल तो नहीं है इसके लिए, मतलब नॉन लोकल तो नहीं है कोई, ये नॉन लोकल है इसके लिए। नॉन लोकल है तो नॉन लोकल क्या है, इसके अंदर ये जो आपकी कंटेंट टाइप है, राइट, जिसको कंटेंट करता है उसके अंदर तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, क्योंकि लोकल इसके लिए है, इसके लिए नहीं, इसके लिए तो नॉन लोकल है। तो इट विल टेक द वैल्यू ऑफ 20 फ्रॉम हियर, सो इट विल बी 20। और यहाँ पे इस ए की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, इस ए की वैल्यू क्या होगी सेकंड वाले की? 20। 28 बिल्कुल। और यहाँ पे इस ए की वैल्यू क्या होगी? 10। ठीक है। और अब अगर सपोज मैंने ये भी यूज नहीं किया, तब सब 10 होंगे, a equal to 10। ठीक है, तो सब 10 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ग्लोबल को ही कंसिडर कर लेगा। आर यू गेटिंग? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो लेकिन उससे पहले मैंने ये कॉल किया हुआ तो ये ए ही इस फंक्शन के अंदर कंसीडर हो जाएगा। तो 10 10 10 हो जाएंगी सारी वैल्यूज, राइट। तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सपोज ये भी नहीं किया, सपोज यहाँ पे भी, अब नॉट डिफाइन का एरर आ जाएगा। तो अब तो एरर ही आ जाएगी, राइट। सर एक डाउट है, हाँ जी बताइए। अगर आउटर फंक्शन पहले कॉल कर ले उसके बाद ए डिक्लेयर करे तब क्या होगा? बताओ क्या होना चाहिए? रूल
अकॉर्डिंग रूल वाइज तो सर डिफाइन नहीं है ना, तो एरर आना चाहिए। एरर है, बिल्कुल ऑब्वियसली एरर होगा। ठीक है, क्योंकि यस यही सर। तो सिनेरियो अभी लिया ना हमने, सिनेरियो एक तरह यही सिनेरियो हो गया ना, इसके बाद हमने कुछ भी किया, इसके बाद असाइन किया, लेकिन यहाँ पे जब कॉल किया तो कॉलिंग के टाइम पे तो नहीं मिला ना ऐसे कुछ, तो अनडिफाइंड है, तो एरर। इसके बाद लिख भी देंगे तो भी क्या, ये तो फंक्शन कॉल हो गया, उसको तो नहीं मिली ना, तो एरर आ जाएगी, जाएगा ही नहीं आगे। यस सर। राइट, सो ये तो है बाय डिफॉल्ट बिहेवियर। अभी जो हमने देखा है ना, दिस इज बाय डिफॉल्ट बिहेवियर, वी कैन चेंज इट, we can change this by default behavior by introducing one more keyword which is known as global। अब देखो ग्लोबल को करके क्या होगा। अब अगर आप एक ग्लोबल टर्म यूज कर दो ना, ये लोकल के साथ, ये नॉन लोकल था इसके लिए और ये लोकल है इसके लिए, अगर यहाँ पे ग्लोबल वर्ड यूज कर दूं मैं, राइट, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, दिस बाय डिफॉल्ट बिहेवियर कैन बी चेंज मोमेंट यू आर यूजिंग ग्लोबल। पहले मैंने ए को डिक्लेयर किया 10, फिर फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करते इसने लिखा ग्लोबल ए। ग्लोबल ए का मतलब है जो ग्लोबल वेरिएबल ए डिक्लेयर किया गया ना, ये उसी को रेफर कर रहा है, ये उसी को रेफर कर रहा है, और उसी को रेफर कर रहा है अगर ये, तो अगर आपने इसको किया इक्वल टू 20, तो क्या हुआ, इस 10 को आपने क्या कर दिया, 20 में बदल दिए। 10 को रीसाइन चेंज हो कर गया दिया 20 से, सर। और फिर यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया, यहाँ पे भी ग्लोबल करके लिखा हुआ है, और कॉल भी किया गया, जैसे कॉल किया है तो यहाँ पे आएगा, और ग्लोबल आपने लिखा हुआ है तो अभी एक ही वैल्यू चल रही है 20, और यहाँ पे भी ग्लोबल लिख दिया तो उसी को रेफर कर रहा है, उसके बाद न्यू वैल्यू असाइन कर दी है, तो उस 20 की वैल्यू अब क्या हो गई है 30। 30 30, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू को क्या प्रिंट करेगा 30 30, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा एक ही वैल्यू को 30 30 करेगा, क्योंकि सेम को ही रेफर कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल कर दिया, और यहाँ पे एक ही वैल्यू को क्या प्रिंट करेगा अगेन 30। 30। So your behavior can be changed. The by default behavior can be changed by introducing global. ये है, that is global. So here all references and assignment are to global A due to the use of keyword global. तो अगर कभी चेंज करना हो मेरे को by default behavior को as per my requirement, तो वहां से ऐसे भी आप कर सकते हैं। सपोज चलो इसके भी अगर मैं वेरिएशन देखूं, अभी तो क्या है कि जो कोड लिखा हुआ है ना, इसका आउटपुट आपका आएगा 30 30 30, क्योंकि एंटीमेट्री 30 हो रही है, लेकिन सपोज आपने क्या किया, आपने सपोज ये लाइन नहीं है यहाँ पे, अब क्या आएगा आउटपुट 30 20 20। 30 20 20, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो ये भी है, ये तो ग्लोबल है, इसके और भी वेरिएशन आप ट्राई कर सकते हैं, अपने से भी ट्राई करना इसको, but I hope you are getting the idea. So this is about how to deal with date and time. Where is component of this? How can you display these as per your choice? And here we have taken one additional thing. Date time के साथ भी हमने जोनिंग का भी एक पार्टीज ऐड करके एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर उसको यूज किया टू सी द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन जोन, based on time zone. And here after that you have seen the case of this namespace and the scoping of this variable and the importance of this global keyword. With the help of global, how can you change the by default scoping label? Sir, one question. हाँ जी, Is it possible for the inner function to take the a is equal to 20 value if there was a equal to 10 on the outside? Like some way to refer to that instead of global a? Globally you are referring and what you are doing? Okay, tell me what do you want to say? Can you repeat? I want the inner function to take the a is equal to 20 value. In like imagine there's no global a in the outer function, no global a's at all. So I want to, we are while I'm checking. in the inner Have you function, read I some want to code? no, I have taken the screenshot of it, but haven't typed it out. Okay. So, okay. So, should we write some? तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो फिर चेंज करके देखते हैं। तो उसी कोड को लिखते हैं पहले तो हम, बेसिक कोड। सो सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डेफ
इसको कुछ भी फंक्शन ऑफ कर देते हैं इसको, ठीक है ना, आउट ऑफ फंक्शन, ये वेरिएबल है आउट fn, चलो ये नेम दे देते हैं कॉलन आउट fn दे दिया। और सपोज अभी हम ये इस तरह से ही ट्रीट करते हैं, अपना नॉर्मल वाला केस लेते हैं जो इससे पहले था, डेफ एंड हियर सपोज इसको मैं नेम दे देता हूँ in function in fn, suppose colon, here I am writing a equals to equals to 30 print, यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी कर रहे हैं प्रिंट भी कर रहे हैं, we are printing a equals to बाहर यहाँ पे हम we are calling it in fn, I'm calling it also, and here I'm just printing some values in this location. Now here we have defined it, and now we can see a equals to 10, मैंने कॉल किया out fn, here also. So if I'm executing it, so right now it is showing 30 20 10। हाँ, अब आप बात करते हैं वेरिएशन, डिफरेंट वेरिएशन की। अभी हमने ग्लोबल का यूज अगर कर रहे हैं हम, सी इफ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबल हियर, ग्लोबल A, here also I'm using global A, sorry, okay. So if I'm executing it now, so the output will be 30 30 30, so it is working, the same scenario. Now tell me, what do you want? Okay, so sir, I want if a equal to 10 is still there on the outside, okay, ठीक, a equal to 20, a equal to 30, all of those numbers are still there. But while I'm inside the inner function, I want to refer to the a is equal to 20. So right now when I do global a, it refers all the way outside to a equal to 10, right? So I don't want to refer to the 10, I want to refer to the 20. How do I do that? You want to refer 20 to the, yeah, a equal to 20 within the outer function, but not all the way to the global function, not to all the way to the global variable a. So then you can need not to use this, so it is local to this, simply as per your requirement you can make changes. So at this time it will take 30, but here it will take 20. Yes, but that's my question, right? Like, how do I make the inner function take the 20? Inner function in the take first the 20 print statement, yeah, in the first print statement that you have over there, right below a equal to 30. Over there, if I want to take, it will take 20 now. Even this a will take 20. Won't it be 30 20 20? It will take now. See what will be the output of this. Okay, tell me. No, okay, I get 20. You are getting 20 here also. See, this 10 has been changed to 20, but you have not changed for this, so it will be 30 20 20. So let me execute is there a way of doing it without changing the global variable a? Without changing global variable a? Yeah, just referring to the variable in the outer function. In some way you need to associate it. अगर आपको यहाँ पे इसके बेसिस पे चेंज करना है, अदरवाइज अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो क्या होगा? What will happen? Then we'll just do the first example that we had, 30 yes, 20 10. Means it will be local then. It will be local, not global. So as per our requirement, we need to use it. We want to access it outside that, although by default it is not possible. But actually we want to use it firstly. So for that purpose, we have this way that we can introduce global. Otherwise, by default, it will be local to this only, and there is no way to access it. अगर access करना है तो global को introduce करना पड़ेगा. Without that, it is not possible. Are you getting this thing now?
So based on our requirement, actually we can make use of it or we cannot use it. अगर मेरे को restricted way में ही काम करना है, तो we have all these variations now, right? जिस तरह का manipulation चाहिए, वो उस तरह का manipulation हम कर लेंगे by writing code, by introducing or by not introducing this global, Okay. right? So there's no other like keyword or anything to refer to that, right? There's I only will not say global. बहुत तरह की बहुत देखो डेवलपमेंट चलता रहता है और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी है, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज में कुछ अलग से बना के फंक्शन उन्होंने दिया हो उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके, बट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें तो आई हैवंट सीन इट। Okay, sir. All right. Thank you. Thank you, Lord. अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो प्लीज शेयर विद द क्लास, तो हमारे लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, बट टिल नाउ आई हैवंट सीन इट, राइट? स्टैंडर्ड में अब पार्टी के थ्रू तो हो सकता है क्योंकि वो तो उस पर्सन का अपना लॉजिक होगा। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज अबाउट स्कोपिंग। तो बाय डिफॉल्ट कैसे काम करते हो और फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव सीन दैट केसेस। Now we will take a break, and after break we'll continue with this Python object in class. Means now we are going to enter into the object-oriented world, and obviously you must be familiar with the Python class and an object before that to deal with the various concepts of object-oriented programming like encapsulation, abstraction, polymorphism, and inheritance. So we'll be taking these concepts, but after a short break. It's 12:05 in my system, so we'll continue our session at 12:20. Till then, you can have a break.
Okay, students, I'm back. So, should we continue our session now? Yes. Okay, so I'm sharing my screen first. So now we will be discussing about object-oriented programming. As I have already mentioned that we have various programming approaches which are being used by various languages like C, C++, Java, Python, C Sharp, right? So most popular approaches are procedure-oriented programming. Some language like C programming are using this procedure-oriented programming. Procedure-oriented programming approach. Here in procedure-oriented programming approach, our main focus is on function. Here main focus is on function. So benefit तो ये होता है कि we can get the facility of simplicity, modularity, because we can divide a large complex problem into some smaller section of code known as functions, right? And this approach, this process is known as modularity also, right? But there was a problem with this procedure-oriented approaches. Is that whatever functions you are creating, there may be dependency between those functions, and sometimes because of this dependency it is very difficult to separate one function from another function, right? And if something is wrong with any function and other functions are dependent on that, so obviously the whole program may be crashed. So some language like C programming are using this kind of approach. So the new concept of object-oriented programming has come into the picture to overcome this kind of problem. So we are concerned with this. Our Python programming is object-oriented originally. Although as I mentioned, Python is a very special language where you can implement your thing by following the approaches of multiple languages. Like we can use various approaches: procedure-oriented, object-oriented, functional programming oriented. So we have various things, various approach. उस तरह से हम implement कर सकते हैं. So object-oriented programming. So to overcome the problem of dependency, actually this concept has come into the picture. Object-oriented programming concept has come into the picture because here in object-oriented programming, everything is revolves around object. So everything is based on. So here in object-oriented programming, we work based on object. It is based on object. And every object, whatever object you will be defining here, whatever object you will be creating, every object is independent from another object. Every object can carry various information and every object is independent from another object. तो dependency की तो यहाँ पे कोई problem ही नहीं, क्योंकि object के form में काम करेंगे और जितने भी आप object create करेंगे, every object is independent from another object. So some languages like हमारे केस में obviously Python object oriented originally, इसलिए हम यूज कर रहे हैं. बाकी C++, C Sharp, .NET, C Sharp and Java, these are object oriented programming languages. So basically these languages are based on object. और object की भी बात करें तो object से पहले एक और concept यहाँ पे एक और term आती है picture में, that is class. So it is here we will be working based on object and class. We can say class and an object कहे तो ज़्यादा सही होगा, object and class, क्योंकि object से भी पहले class term picture में आता है और इन्हीं के थ्रू इनको हम किस तरीके से यूज करेंगे उस बेस पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? Encapsulation. There are yes, there are 4 pillars of object oriented programming, and these are basically we have encapsulation, we have abstraction,
abstraction, inheritance, and polymorphism. So, but before working with this, before implementing this concept, we must be familiar with how these class and objects are defining in Python. Means how can we define, what is the meaning of class, how can we define it, what can be contained by this class, and how can we create the object to access the feature of the class. What is the relevance of these things actually? So first of all, come to the class term. So what is a class? What do you think? वैसे हमने एक इनिशियल सेशन में भी एक लिटिल बिट ओवरव्यू हम ले चुके हैं इस चीज़ का, अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग मिलेंगे इन चीज़ों को. सो व्हाट इज अ क्लास? देयर मे बी मेनी डेफिनेशन ऑफ क्लास. हाँ जी, कुछ डेफिनेशन बताइए इफ यू हैव सम आइडिया. यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट सर. ठीक है, यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट. सो वी कैन से क्लास is a blueprint. Blueprint जिसके लिए हम layout, template इस तरह के वर्ड भी यूज कर लेते हैं. So you can say class is a blueprint template for the objects. Obviously user defined करेगा. We have various predefined classes also, but here यहाँ पे हम user defined class की ही बात कर रहे हैं. So user defined blueprint. Why we are saying so? Class is a blueprint template for the objects. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था एक सिविल इंडस्ट्री का, कि सपोज इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वन सिविल कंस्ट्रक्शन. एक सिविल कंस्ट्रक्शन में एक बिल्डिंग का बनना है, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे दिखाया गया कि ये लैंड है, यहाँ पे बिल्डिंग बनना है, और बिना किसी प्लानिंग के जो बिल्डर है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है. ऐसा तो नहीं होता. तो क्या होता है, प्रॉपर एक आर्किटेक्चर प्लान बनाया जाता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, कि भाई ये जो बिल्डिंग है किस टाइप की बिल्डिंग बननी है. ये स्कूल बिल्डिंग होगी, या ये फिर ऑफिस बिल्डिंग होगी, या फिर एक रेजिडेंशियल फ्लैट्स होंगे, राइट. तो ये किस तरह की बिल्डिंग है, उस पर इस पर रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है. अगर ये यहाँ पे जो बिल्डिंग बननी है वो एक अपार्टमेंट है, एक रेजिडेंशियल सोसाइटी को डेवलप करना है, अपार्टमेंट्स बनने हैं वहाँ पे, तो जो अपार्टमेंट में जो फ्लैट्स हैं वो किस कैटेगरी के होंगे, 2 BHK 3 BHK. वहाँ पे बाकी फैसिलिटी लाइक जैसे पार्क वगैरह करना है, तो पार्क का कैसे हम डिफाइन करेंगे उस एरिया में, पार्क का डायमेंशन क्या होगा, 2 BHK 4 BHK का डायमेंशन क्या होगा, कितने फ्लोर्स वहाँ पे डेवलप होंगे, बाकी वहाँ पे सीवेज सिस्टम कैसे काम करेगा, राइट. और बाकी अदर फैसिलिटी को भी वहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया. इवन जो फ्लैट बना रहे हैं, फ्लैट के अंदर कितने नंबर ऑफ डोर्स होंगे, डोर्स की क्वालिटी क्या होगी. सो एवरीथिंग मीन्स वट एवर. सो एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है, एक आर्किटेक्चर प्लान बनाया जाता है. उसी के लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, ब्लूप्रिंट. तो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है. वंस अ ब्लूप्रिंट इज प्रिपेयर्ड, आफ्टर दैट बाय फॉलोइंग दैट आर्किटेक्चर प्लान, बाय फॉलोइंग दैट ब्लूप्रिंट, we can create as many houses as we want in that society, in that building, right. So class is just like that. तो इसको हम बोले दूसरे टर्म्स में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो क्लास एक केवल डिक्लेरेशन है, एक एब्स्ट्रैक्शन है. एब्स्ट्रैक्शन मींस एक रिप्रेजेंटेशन है केवल. अभी रियल में हम कुछ करने नहीं जा रहे, वी आर जस्ट प्लानिंग, वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग कि मेरे प्रोजेक्ट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है. वी आर जस्ट गिविंग सम शेप टू इट, राइट. So you can say class. तो कई तरह के we can define this class in different way. एक definition ही हो सकती है. Class, what is class? Class is an abstraction. Abstraction means simply representation. अभी implement नहीं किया है. Representation है केवल. Represent के here we are just planning something. Representation, you can say declaration. We have different word for the same. Declaration of what? Declaration of real world entities. Entities क्या होंगे? Depends on our requirement. Of real world entities called object. ये real world entities को ही हम object बोलते हैं. Called objects that are having some characteristics that are having some characteristics and behavior. और यहाँ पे characteristics जो है इनको हम इसके लिए भी कई टर्म्स यूज कर लेते हैं. characteristics को sometimes we call it properties,
समटाइम्स एट्रीब्यूट वर्ड भी यूज कर लेते हैं, तो ये फंक्शंस भी इसके एट्रीब्यूट होंगे, मेथड्स भी इसके एट्रीब्यूट होंगे। प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट ये वर्ड हम यूज कर लेते हैं, बिहेवियर के लिए वी यूज वर्ड मेथड। व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग एनी फंक्शन विद इन ए क्लास इट इज नोन एज मेथड, उसके लिए मेथड टर्म यूज किया जाता है। और इसी को मैं दूसरे सिनेरियो में बोलूं कि व्हाटएवर मेथड यू आर डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास, डायरेक्टली कर रहे हैं डेफ करके, तो उसको लिए हम टर्म यूज करते हैं फंक्शन। जनरली ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन पाइथन में अगर हम कोई मेथड ऐसा है कि जो बिना किसी क्लास के हम डिफाइन करें, जो अब इससे पहले अभी तक हमने किया है डेफ करके, सो वी यूज टर्म फंक्शन फॉर दैट। और यही फंक्शन अगर क्लास के अंदर डिफाइन किया जाए, जैसा भी हम करने जा रहे हैं, तो वी यूज वन वर्ड मेथड फॉर दैट, राइट। हम दोनों में डिफरेंस होता है, जब हम इनको थोड़ा सा और लेंगे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, देन वी विल डिस्कस सम मोर फीचर ऑफ इट, some more characteristics of it. So that is class. और भी डेफिनेशन हो सकती है। तो क्लास एक केवल डिक्लेरेशन है, जो हम करने जा रहे हैं ना, क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड, किस तरह की फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे, मतलब किस तरह की इन्फॉर्मेशन उस बेस पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, किस किस तरह की फंक्शनैलिटी डिफाइन होगी, उस बेसिस पर मेथड डिफाइन कर लेंगे। तो सारी चीजों को अपनी बना के रख लेंगे, केवल डिक्लेयर करके रख लेंगे। उसके बाद जब भी मेरे को जो भी जिस फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। तो बेसिकली अगर क्लास को मैं बोलूं एक सिंपल बुकिश लैंग्वेज भी अगर हम ले लें यहाँ पे, सो वी कैन से क्लास इज ए, अब थोड़ा सा कोड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ले, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स आपके एट्रीब्यूट मींस वेरिएबल्स बेसिकली। Class is a collection of data member and member function. Member functions. Member functions means your methods, behavior. A member means characteristics, properties, attribute. So class is a collection of data members and member functions. और member functions का क्या होगा? Member functions which will act on these data member, कि ये जो वेरिएबल वैल्यू कैसे प्रोसेस होगी। उसी बेस पर फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि प्रोसेसिंग किस तरह की होगी, क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होगी। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस व्हिच विल एक्ट ऑन दीज डेटा मेंबर। वो मेंबर फंक्शन जो हमारे डेटा मेंबर पे वर्क करेंगे डिपेंडिंग। और मेथड की बात करें तो उसके अपने भी इट्स अ फंक्शन डिफाइंड विद इन ए क्लास, सो उसके अपने पैरामीटर, यू कैन पास 0 मोर पैरामीटर एज पर योर चॉइस विद मेथड्स। वो तो डिपेंड है किस तरह की फंक्शनैलिटी में डिफाइन करनी है, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, बट एक्चुअली होता है क्या ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? आपने जो बोला था, रियल वर्ल्ड एंटिटीज बिल्कुल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट है क्या बेसिकली? इट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। One object can be, it's a real world entity that is having, or that may have some characteristics and behavior, right? It is having some characteristics and behavior. So इसके अगर दूसरे हम थोड़ा सा इसकी कुछ characteristics देखें, तो किस लैंग्वेज देखें, तो बेसिकली implementation of class will take place in the form of object. That is why इसको हम डिफाइन करते कुछ इस तरीके से भी, object is an instance of class. Instance means start of something. So implementation of class will be started through object. That is why we are calling it object is an instance of class. And this process is known as this process of creating instance. Creating instance means object creation. This process of
object creation is known as, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंस्टेंशिएशन. Instance means object, basically instance creation means object creation. So अब इसकी characteristics क्या है object की? We can create, और किसी तो object के थ्रू हम क्लास के फीचर को एक्सेस करते हैं, और we can create as many object as we require. कोई लिमिटेशन नहीं कि क्लास के इतनी ऑब्जेक्ट बनेंगे. वी कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज वी रिक्वायर. इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट एक्चुअली, राइट. और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने बताया, जो प्रोसेस प्रोग्रामिंग से इसको डिफरेंट करता है, हाँ जी, वो क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट. अगर हम बात करें वी ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. अगर एक बात करें ह्यूमन बीइंग क्लास, तो एक क्लास हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग जिसमें ह्यूमंस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हो सकते हैं, वो हमने डिफाइन कर दिया, राइट. एंड वी ऑल आर ऑब्जेक्ट, और हम सब भी इस ह्यूमन बीइंग क्लास के ऑब्जेक्ट है, और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. हर एक पर्सन की अपनी कुछ खासियत होती है, राइट. उसका अपना नेचर, और जो बोलते हैं ना इसका नेचर, उसका अपना नेचर होता है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और हर एक ऑब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है, और हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप में दूसरे ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, राइट. सो जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली एवरी ऑब्जेक्ट हैज फॉलोइंग फीचर. हेलो, हाँ मैं ऑफिस में हूँ. Okay, so here's telling that every object has following features. कुछ फीचर्स है, तो इससे डिस्कशन से हमें पता लगता है हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ फीचर्स क्या हुई. सबसे पहली फीचर है आइडेंटिटी. हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी है, राइट. सो जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड यूनिकली, right. So that is must be defined uniquely. Second characteristics क्या होगी इसकी, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ characteristics है. सेकंड फीचर जो होगी, सेकंड फीचर एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ characteristics है. स्टेट है, स्टेट वर्ड भी यूज कर लेते हैं हर एक ऑब्जेक्ट की. स्टेट मीन्स characteristics. ओवर द टाइम चेंज भी हो सकती है, डिपेंड है कि किस तरह के फंक्शनैलिटी, किस तरह के इन्वायरमेंट में उसको रखा जा रहा है, राइट. तो प्रॉपर्टी है जिसके लिए हम सिंपली वेरिएबल्स, ये वेरिएबल या एट्रीब्यूट टर्म्स भी यूज कर लेते हैं. अगर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरिएबल या एट्रीब्यूट टर्म यूज करते हैं. ये मेरे जनरल वर्ड है जो जनरल सेंस में हम यूज कर रहे हैं. So basically we can say an object has some attribute attributes that represent a state. Attribute क्या करते हैं? Basically उसकी एक state बताते हैं that represent
state of an object. So basically it is used to reflect the property characteristics of an object, in other words we can say. और थर्ड चीज क्या हुई, आपको आइडिया है क्या? बिहेवियर. So an object has method that represent its behavior. So an object has methods that represent its behavior. तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे सपोज एक क्लास, इसको थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देखते हैं. डेट टाइम, क्या होगा मैंने दूसरे वाले में कर दिया, ठीक है. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. ये वही थ्योरी है यहाँ पे जो भी हमने एक्सप्लेन की है. सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखते हैं इसका, तो इससे ज़्यादा क्लियर कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ मैं इसका. सो बेसिकली सपोज एक क्लास हमने बनाई, उसको नेम दे दिया हमने पर्सन. Every class may contain some characteristics and behavior. हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ स्टेट है and behavior to represent some behavior. स्पेलिंग देख लेना, कहीं बिहेवियर की स्पेलिंग रॉन्ग ना कर दी उन्होंने कहीं, ठीक है ना. सो हियर वी हैव दिस. तो स्टेट जैसे क्या हो सकता है, पर्सन है, पर्सन की स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, प्रोफेशन, और उसके कुछ बिहेवियर भी हो सकते हैं. कई बिहेवियर हो सकते हैं जैसे वर्क, क्या वर्क कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, स्टडी, फंक्शन मीन्स जो हम क्लास के फॉर्म में मेथड बोलेंगे. सो वी कैन हैव वेरियस बिहेवियर ऑफ इट. एंड आई हैव मेंशन वी कैन क्रिएट, अब इनको जब भी यूज करना है तो वी कैन एक्सेस दिस with the help of object, and we can create as many objects as we require, and every object is independent from another object. If I am considering this fact, so it may be the case कि मैंने एक object बनाया है यहाँ पे, I have created one object. So I created one object जिसको नेम दिया, यहाँ पे जो characteristics होंगी, if I have created some object, ऑब्जेक्ट 1, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1. सो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो हियर इट कैन टेक दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. ये इसका बिहेवियर होगा. सो नेम हो सकता है यहाँ पे कुछ नेम हो, सपोज कुछ नेम ऐसे हुआ अभिषेक
ईमेल आईडी, कुछ ईमेल आईडी हो गई यहाँ पे, सपोज कुछ भी, अभी gmail.com, suppose something like this. Vendor, implementation की बात कर रहे हैं अब हम, implementation है तो इनकी वैल्यू, सपोज here I have written AI engineer, इसका अपना तरीका होगा, अपना वे होगा वर्क करने का, स्टडी करने का, राइट? So similarly we can create another object, जितना चाहे we can create as many objects as we want. So it may be the case we are creating another object, कुछ भी नेम दे, suppose I am calling it object 2. Suppose यहाँ पे हो गया ये अभिशिखा, मेल आईडी कुछ हो गया, सपोज कुछ भी हमने कर लिया, सभी, gender, male. Suppose here we have specified profession data scientist. और एंड अभिषिका का अपना अलग वे होगा वर्क और स्टडी करने का, राइट? उसका बिहेवियर अपना अलग हो सकता है इससे, अभिषेक से. सो दैट इज द सिनेरियो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इट. सो हर एक ऑब्जेक्ट we can create as many objects as we can. Every object is independent from object. Every object can carry different type information, right? And it is independent from the another one. So that these are some facts about these objects. So now with this we will proceed further. तो अब ये कैसे हम create करते हैं, कैसे create करेंगे in Python program? How can we define it? How can we define class, and how can we create the object of it? What is the relevance of it? Now I am going to take the case of that. So if you want to create a class in Python programming, now I'll be taking this case. I'm creating a script. So if I want to create a class, so syntax is very simple. You will write class, you can give any name to your class, and within this class we can have optional documentation string here also. हमने function के साथ use किया था. You can use with modular packages also, and we can use the same with class also. Reason भी same है, right? Reason भी same है कि हो सकता है we can define several hundreds of classes, और कुछ टाइम बाद हम काम ना करें, प्रोजेक्ट पर दोबारा है तो हमें आइडिया ही ना हो भाई क्लास के किस लिए बनाई मैंने किया है. बट अगर हम कुछ मीनिंगफुल ऐड कर दें, उसके मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, तो उस डिस्क्रिप्शन को देख के हमें पता लग जाएगी व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस क्लास. सो यू कैन यूज ऑप्शनल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग विद दैट. और यहाँ पे भी इसका टेक्स्ट देखना और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग का, उसके लिए वही एट्रीब्यूट यूज होगा जो पहले भी आपने किया है. डू यू रिमेंबर क्या एट्रीब्यूट था? इफ यू वांट टू सी द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग टेक्स्ट ऑफ फंक्शन, what you will use? हाँ जी, क्या यूज करेंगे? underscore doc underscore. Yes. हाँ, underscore doc and underscore, right? So here also we will be using the same. और after that it may contain various member. लेकिन अभी मैं body part अगर complete करें तो just pass में just we are completing it. So it may contain various members now. Your class may contain, और यहाँ पे इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉलन यहाँ पे आ गया. सो योर क्लास में कंटेन वेरियस मेंबर्स, इट में कंटेन वेरियस मेंबर्स एंड मेथड्स. सो हियर एज आई हैव मेंशन, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. तो डेटा मेंबर की भी हम बात करें तो कई तरह के मेंबर हो सकते हैं. यहाँ पे डेटा मेंबर है तो डेटा मेंबर यूज टू रेफर योर वेरिएबल, और वेरिएबल जो हम डिफाइन करेंगे, दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टू टाइप्स इन within class. Whatever variable we will be defining within class, there may be two types of it. These are known as class variable and instance variable. Right, and it may contain various methods. Member functions means methods. Whatever function we are defining within class, these are known as methods. So it may contain various methods. Even we have various
other special member like constructor, destructor. So we have these various special member here. So now we will be discussing about all these member and the various characteristics of these member of the class, but after your break. Right? तो अभी जो implement करेंगे continuous इसको we will continue this session in second half also. क्योंकि अभी तो बीच में ही ब्रेक हो जाएगा तो बेटर है कि तभी कंटिन्यू करें. तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट, वी विल बी राइटिंग कोड एंड थ्रू दोज एग्जांपल्स we will be taking, you will be able to understand various characteristics, various features, various flexibility, various restrictions available with these different members. तो भी सेशन को इतना ही रखते हैं और we will continue this in the second half, right? 2:30 पे हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir.